कंटेनर भितर रहुची कोन मु ऑलरेडी कहि छी कंटेनर भितर हमें एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूचे राइट कंटेनर भितर तो मु जो लास्ट क्लास रे गोटे अपाची कंटेनर क्रिएट कली एचटीटीपी कंटेनर से कंटेनर रन कली ता भितर जो एप्लीकेशन शो कली कोन थिला ना एप्लीकेशन रन होतला ना ता भितर लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू तुम पूरा डायग्राम करी पूरा फुल रे बतै दोची तमे जदी कंटेनर कोन से कोन होल्ड करूची जानी पारिबनी देन तमे कंटेनर कोनसे आंसर देई भी पारिबो राइट तो क्लियरली सुना मु कहूची why we need containerization हम containerization काहे की दरकार containerization is needed because it provides lightweight efficient and consistent way to package deploy and run applications across different environments माने कोन गोटे lightweight और efficient manner रे बा consistent way रे जो सॉफ्टवेयर लिखा हितो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनैतिबे डेवलपर ताको पैकेज कर बिल्ड करी पैकेज करी राइट हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट रे डिप्लॉय करिबा तो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स कोन एठी मल्टीपल एनवायरनमेंट्स राइट वी हैव every companies they would have multiple environments like development environment staging environment but testing environment QA environment production environment right so the same package or we can say it image right that can be shipped to any environment and from there we can create the containers सेटा जोटा एठी लिखिछि कोन consistency across environments so containers ensures that an application runs the same way in development testing production and eliminating the work on my machine problem means what is this work on my machine problem तुम जानी थी गाइस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल विषय हम ऑलरेडी डिस्कशन करथिले बा कोनसी गोटे देखो बेसिकली कोन हो ना हम जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रहिता है तो कोन डेवलपर माने कोन तांकर कोड सेठी डेवलप करंती जेतो कोड डेवलप करंती सेतेरे सही एनवायरनमेंट रे से माने तां कोड को निजे ही टेस्ट करंती काम करूची ना नहीं यूनिट टेस्टिंग करंती राइट टेस्ट कला परे ताकू तापरे कंप्लीट से पर्टिकुलर जो स्निपेट बा कोड लिखि दिबे एटा काम करू छी नै देखला परे ताको नॉर्मली कोड रिपोजिटरी कमिट करंती तापर सेही कोड को हमें नै करी टेस्ट एनवायरनमेंट बिल्ड को सरला पर बिल्ड एनवायरनमेंट रे बिल्ड सरला पर हमें टेस्टिंग एनवायरनमेंट को पठाऊ फर्दर टेस्टिंग पई तापर टेस्टिंग जदी सक्सेस हे गेला अप्रूवल मिल गेला सब हे गेला देन प्रोडक्शन को जो फाइनल बट कंटेनर केस रे कोन होची ना सेही एप्लीकेशन जोटा हमें रन करिवा राइट that can run on any environment but if we are not using container technology then what will happen if you are not using containerization suppose what a developer development environment re okay development environment re suppose dev environment re developer काम करछि राइट तो से जो धर गोटे जावा एप्लीकेशंस बनाउछि सपोज डेवलपर कोन कला 12 वर्जन जावा 12 रे काम करछि एटाला हमर डेव एनवायरनमेंट ओके एंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट वी हैव सपोज 12 okay and here in production suppose this is testing and here suppose production environment okay suppose here we have 11 versions of Java so जो डेवलपर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रे कोड लिखिथिबो से कोड कोन ता एनवायरनमेंट रे डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म रे ता सिस्टम रे डेवलपमेंट सिस्टम सर्वर रे परफेक्ट काम करिवो सेटा से कोन टेस्ट पई पठे देला से जो कोड आसला एठी की टेस्ट एनवायरनमेंट रे परफेक्ट काम कला बट सरी गला परे
राइट जेतबेले से प्रोडक्शन को अप्रूवल सरला टेस्ट एनवायरनमेंट टेस्ट साइन ऑफ इज डन all stakeholders approved then when it deployed into productions तो एठी कोन अछि ना 11 वर्जन जावा अछि तो हम एप्लीकेशन ता जोटा 12 वर्जन रे काम करूची प्रॉपर्ली it might break in 11 version 11 version right so 11 version रे कोन हो काम करि न पारे बा किछि फंक्शनलिटी ठीक से काम करिवनी तो एठी प्रॉब्लम आसीबा हमर कोन ना जो एप्लीकेशंस डेवलप होइदिला 12 वर्जन ताटी 11 काम कलानी तो हमें पर तार ट्रबल शूट कला पर जना पड़ियो जे हमर जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट is not compatible with test environment or development environment. So here we got the compatibility issue. Compatibility issue. Right? So ठीक एक केस रे कौन करा हो ना पुणी सपोर्ट इंजीनियर्स माने कौन करबे अपडेट करिवे 11 रु प्रोडक्शन को बा मे बी जो रिलीज हबार थे से रिलीज ता को पोस्टपोन करिवे बा कैंसिल करिवे देन सेटा मे बी नेक्स्ट केबे चेंज करे आफ्टर अपग्रेडिंग दिस टू 12 तापर जाय कि से माने डिप्लॉय करिवे राइट एटा हमर कोन विदाउट यूजिंग कंटेनर जदि हमें कंटेनर यूज न करिवा नॉर्मल मैनुअली जदि हमें डिप्लॉय करछे बा विदाउट यूजिंग कंटेनर डिफरेंट टूल यूज करके हमें डिप्लॉयमेंट करूचे बट इन केस ऑफ कंटेनर जदि हमें कंटेनर यूज करबा कोन हबो ना जहां भी हमें डेवलप कंटेनर कराला राइट डेवलपर तार डेवलप कला त हमें जते बळे बिल्ड पैसारिला राइट तो हमें कौन करबा टेस्ट एनवायरनमेंट सपोज से कंटेनर को हमें टेस्ट करबा टेस्ट एनवायरनमेंट सपोज 12 वर्जन्स रो जावा अछि तो हमें जते कंटेनर गोटे क्रिएट करबा तो कंटेनर रे हमें कोन थिबा दरकार तार हमें जानिले जावा 12 यूज होइछि डेवलपर यूज करछि जावा 12 तो हमें कोन करिया कंटेनर रे जो पैकेजिंग करबा सेठी जावा 12 पैकेज करबा ता सहित जहां भी लाइब्रेरीज जहां भी बाइनरीज कोन डेवलपर यूज करिछि डेवलप करिया पई सब पैकेज हला ता सहित कंप्लीट एप्लीकेशन कोड राइट एप्लीकेशंस बाइनरी कंप्लीट पैकेज जो पैकेज हेगिरी कोन हबो गोटे इमेज क्रिएट हबो इमेज क्रिएट हबो जोटा कि हमरो से इमेज ता हमरो कोन गोटे बाइनरी फाइल सही इमेज को हमें कौन करबा ना मल्टीपल एनवायरनमेंट रे सपोज से जोटा पर्टिकुलर पैकेज ता को हमें QA environment suppose further staging environment I would testing environment suppose staging environment okay staging environment सरला पर सपोज हमें प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को सेंड करिया तो एठी कोन हला ना जो कंटेनर हमें क्रिएट करले ये कंटेनर हमें क्रिएट कले ए कंटेनर रे वर्तमान जहा दरकार गोटे एप्लीकेशन रन हबा पई सब ऑलरेडी पैकेज्ड अछि सब ऑलरेडी कोन पैकेज अछि तो सही पर्टिकुलर पैकेज ता को हमें कोन करबा डिप्लॉय कर दो डिफरेंट एनवायरनमेंट को कोनला सब एनवायरनमेंट रे से काम करिवो तो एटा हला बेनिफिट्स ऑफ कंटेनर एठी हला कोन कंसिस्टेंसी रहिला कंसिस्टेंसी ना जहां भी हमें पैकेज सब जहां भी सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन जो वर्जन रो दरकार ऑलरेडी पैकेज अछि तो सेटा को हमें इजीली कोन करले शिफ्ट कर देले डिफरेंट एनवायरनमेंट को यही इमेज को नहीं कि हमें कोन करबा एठी गोटे
कंटेनर क्रिएट कर दो तो सब कंटेनर रन अप कारण इक्वली अछि तो सेटा ही कंसिस्टेंसी अक्रॉस एनवायरनमेंट तो एबे कोन हला सब एनवायरनमेंट रे सेम कंसिस्टेंसी रहिला राइट तो testing and productions eliminating work on my machine problem and they package all dependencies configurations and runtime environments together जोटा कि कहली जहाँ भी डिपेंडेंसीज रोचे गोटे एप्लिकेशन रन हवा पाई सब पैकेज करके रन कर ओके हम गोटे हला कोन आइसोलेशन आइसोलेशन कोन ईच कंटेनर रन्स इन इट्स own isolated environment preventing conflicts between applications. This allows multiple applications or service to run on the same host without interfering with each other. तो आमे कौन करिबा ना गोटे मशीन रे राइट गोटे मशीन रे आमे कौन करि परिया मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट कर परिया कौन कर परिया मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट कर परिया तो ता विषय आमे जानिबा डोंट वरी अबाउट दैट तो आमे कोन करबा मल्टीपल कंटेनर्स रन कर परिबा ओके सपोज एथिरे आमे आप 1 रन करछे एथिरे आ गोटे एप्लीकेशंस रन होउची आप 2 एथिरे सपोज आ गोटे एप्लीकेशंस रन होउची आप 3 एथिरे सपोज गोटे डेटाबेस रन होउची तो कोन होची हमर गोटे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रे गोटे मशीन रे हम मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर परिबे बा मल्टीपल कंटेनर्स रन कर परिबे तो जोथरे कि ए कंटेनर सहित आरो किछि लिंक नथिबो तो कोन जदि एटा किछि प्रॉब्लम होला दिस विल नॉट तो आइसोलेटेड दैट कैन बी आइसोलेटेड एंड कैन वर्क सेपरेटली ओके सो व्हाई हाउ इट आइसोलेटेड बिकॉज़ जो एप्लीकेशन रन होवा पय जहा डिपेंडेंसी दगा तांका पाखरे अछि सहित का सहित कनेक्शंस बा लिंक दरकार नहीं राइट सो all container run its own isolated environment okay portability containers can run any system that supports container runtimes portability जेमति कि बुझेली माने हमें कोन जो कंटेनर्स रन कल इमेज थ्रू तो हमें जे कोन सी एनवायरनमेंट को इजीली पोर्ट करि परिबा शिप करि परिबा तो containers can run on any systems that supports container runtime जेमति कि docker बा kubernetes install हेतियो it can supports whether it's a developer laptop cloud server ja on premises जहां भी server they abstract away differences like in operating systems and in infrastructures so easily we can portable the applications scalability and efficiency containers are lightweight right and compared to traditional version because they share the host OS kernel तो क्वेश्चन सेठी पचारिबे काहे कि गोटे कंटेनर definitely you'll get a questions if you are going for the docker interviews containers are why containers are lightweight because they share the host OS kernel माने जो मशीन रे से कर्नल जो मशीन रे कंटेनर रन होची तो से कौन करिवो ना सही मशीन रो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ कर्नल यूज करिवो हमको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दरकार नहीं तो सेति पई कोन लाइट वेट और फास्टर scalability so they can start up quickly and use fewer system resources already हमें बुझी चे रिसोर्स केमती कम यूज करे तो सेति पे स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी पे कंटेनर दरकार और माइक्रो सर्विसेस आर्किटेक्चर जेतो आइसोलेटेड रे आइसोलेशन पे यूज कराउची माने कंटेनराइजेशन हम एप्लीकेशन वी कैन आइसोलेट इट सो यूजिंग आइसोलेशंस वी कैन अचीव दिस माइक्रो सर्विसेस माने गोटे कोन फुल स्टैक एप्लीकेशंस को हम डिफरेंट पार्ट रे छोटो छोटो चंक करिकरी बिल्ड करिकरी
डिफरेंट कंटेनर रन करि परिबा तो माइक्रो सर्विस में हम भलो भाबे बुझिबा कुबरनेटिस पार्ट रे हमको बुझे देई भलो भाबे राइट सो जस्ट मन रखि दाओ Containers make it easier to build and manage microservices based applications. Each microservices can run its own container, allowing independent scaling and updates. So it allows independent scaling and updates. I would tell like rapid deployment of CI/CD. जो continuous integration of deployment हमें delivery বা deployment हमें करूचे तो इटा कौन using container it becomes very rapidly it can be done with quick easy way we can deploy it so हम करियर कौन अछि खाली ना गोटे इमेज को बिल्ड करिकरी से इमेज को कौन गोटे सर्वर रे गोटे एनवायरनमेंट रे रन कर दवर अछि बहुत क्विक डिप्लॉयमेंट राइट आउला सिक्योरिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट विषय आम तो भल भाव जानी केमती से रिसोर्स प्रिसाइजली जेतिकी दरकार सेतिकी रिसोर्स केमती से यूज करूची रिसोर्स हला कोन कंप्यूटर रिसोर्सेस जेंति कि सीपीयू मेमोरी स्टोरेज नेटवर्क ऑल दिस थिंग्स राइट जेतिकी दरकार से सेतिकी मेमोरी यूज करिवो जेतिकी दरकार सेतिकी स्टोरेज यूज करिवो नॉट मोर देन दैट so properly manage the resources and security so for security also content provides security isolations reducing risk of one compromised applications affecting other जेहेतु आम आइसोलेट करी रखुचे गोटे किसी इम्पैक्ट है so the other one will still work it will not impact okay so आम जो बेसिकली कंटेनर टा आम जानले कौन राइट तो कंटेनर कौन रखी द कंटेनर होल्ड्स an application and required dependencies to run right गोटे applications run हबा पई जहा सब दरकार गोटे कंटेनर भितर तार डिपेंडेंसीज पूरा पैकेज हेकरी थाए so a container holds an applications inside it not only applications तबे जहां भी गोटे रखिबा को जाउ छ कुछ छोटो ad hoc वर्क तमे करबा को जाउ छ गोटे छोटो यूनिक्स कमांड एग्जीक्यूट करिया को बेसिकली देखिबा बोले it holds an application inside it and the required binaries and libraries जेमति कि तुमको इमेज करी बुझेली राइट ए पर्टिकुलर इमेज ता हमें क्रिएट कला पर याको रन कले कोन हो गोटे इमेज को हमें रन कले कोन हो गोटे कंटेनर क्रिएट हो तो कंटेनर जतो गोटे क्रिएट होउची से कंटेनर रन होउची रन हवा पे हमें इमेज यूज करछे से इमेज रे हमें लिखितले कोन इंस्ट्रक्शंस दिला कि तमे जावा इंस्टॉल करो ए लाइब्रेरी कॉपी करो से बाइनरी की रन कराओ ता एप्लीकेशंस डिप्लॉय करो से सब हे गला पर लेकिन रन हो गोटे कंटेनर पूरा डिटेल्स से बुझी पर हम जतो आगु बुझीबा औरी कमांड सब यूज करबा ओके विदाउट कंटेनर हेतले कोन प्रॉब्लम थांता राइट हाउ विथ कंटेनर केमती बेनिफिट्स हम पाइले ऑलरेडी मु ई पार्ट हमको बुझे देछि राइट विदाउट कंटेनर हाउ विथ कंटेनर रो बेनिफिट्स कोन एटे विदाउट कंटेनर रे हमें केमती जहाँ भी सब करथिले इंडिविजुअल कोन मशीन रे हमको कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करियार थिला राइट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस करिवार थिला इंडिविजुअल सिस्टम रे ये सिस्टम इंडिविजुअल हमको करियार अछि यदि किछि भी गोटे मिस हे गला देन एप्लीकेशन विल नॉट वर्क तो एठी कोन होछि ना हमें वंस पैकेज करूचे थोड़े पैकेज कर दोचे देन वी रन इट मल्टीपल एनवायरनमेंट्स बुझि पालो क्लियरली so now let's go ahead and work on the command lines docker information check करे पे कौन कमांड हम यूज करिया एटाला client so but server
प्रॉब्लम आसला कौन पई मते को लास्ट क्लास रे भी बतैथिली इट सेज परमिशन डिनाइड ताको केमती फिक्स करबा ता पई हमको सुपर यूजर यूज करया पड़ियो sudo राइट मते यूज करबी docker info सी मते कोन सर्वर इन्फॉर्मेशंस भी देला राइट तो चेक करया पई docker image कौन कमांड रुका docker image चेक करया पई कौन कमांड docker images बा हमें इमेज करके ls मार परिया राइट इमेज ओके तो ये जो हमें इमेज यूज करछे राइट ये इमेज को सपोज हमर दरकार नहीं and we want to delete some images how we can do that docker prune no image prune टा में यूज करथले कंटेनर पाई इमेज अछि मते ई इमेज को कोन करे अछि नहीं rm हां rm यूज करिया ठीक अछि जदि भी तमे किछि जानि पारुना देन हमें हेल्प यूज करिबा docker image कोन ए सब ऑप्शंस आसुची ओके हमें एठे जे prune यूज करिबा कोन करिवो remove unused images but हमें जानि ने ना को इमेज था unused हमें यूज करिने राइट तो हमर को इमेज ता दरकार राइट तापर हम यदि prune यूज करिबा what it will do it will remove unused images ता माने जो इमेज द्वारा कंटेनर रन होउची कंटेनर क्रिएट करिया पे जो इमेज यूज हेची से इमेज को छाड़ी किरी बाकी जो इमेज अछि ताकू से डिलीट कर दो बट एटी प्रॉब्लम कोन आसीबो ना सही इमेज में भी जो इमेज अछि हम यूज करेंगे तो मे बी टुमारो वी कैन यूज इट राइट हमें यदि प्रून मार दो देन सही इमेज भी हटाई दबो पुन तर हमको पुल करिया पड़ियो बा डाउनलोड करिया सो ता जगह हम कोन करि परिबो rm यूज करिकरी सिलेक्टेड इमेज को गोटे बा दुईटा इमेज को हमें डिलीट कर पारिबा ए केस रे सपोज मते अमेज़न लिनक्स को डिलीट करिया अछि बा मते ए पर्टिकुलर httpd ए पर्टिकुलर वर्जन को डिलीट करिया अछि तुम कोन करिवे docker image rm then image id बा image name and tag तो image id ता बडा बेटर हबो जे तोटा सिक्योर अछि माने यूनिक अछि सॉरी एटा यूनिक अछि तो दे देखो all images are deleted जब भी कोनसी इमेज यूज हेची कंटेनर क्रिएट करिवा पाई बा कंटेनर रे यूज हेची then we cannot delete that image let me show you suppose I'm going to okay now how many images will be there will be only 2 images right गोटे इमेज मु डिलीट कर देली जदि मु चाहूची सपोज गोटे कंटेनर क्रिएट करबी तो कंटेनर चेक करिया पई कोन कमांड docker container ls -a इत्ते सारा कोन कंटेनर अछि बट सब जगह एग्जिट अछि तो नाउ सुबश्री मते को ए सब कंटेनर को डिलीट करिया पई कोन कमांड यूज करबी ए सब कोन एग्जिटेड अछि डिफॉल्ट वी आर नॉट यूजिंग दिस कंटेनर्स rm command यूज करियो rm हां rm कमांड यूज करले मु गोटे गोटे सिंगल डिलीट करिवि राइट तो तारा गोटे कमांड कोन अछि सेम कमांड हेल्प मारियो एटी भी prune हम यूज करि परिबा docker container prune ता माने जहा भी एग्जिटेड कंटेनर अछि सब से डिलीट कर लो देखो prune
remove all stopped containers जहाँ भी container stop अच्छी बा exit अच्छी सब delete कर दो ओके सो हमें कौन prune यूज कर पाइबा तो मैं पे सपोज docker prune सॉरी हम कौन करें docker container prune कंटेनर कमांड हमें छाड़ दीजिए कंटेनर यस ओके कौन बोले सब जगह कंटेनर को से कौन बोला डिलीट कर देला एबे जदि हमें चेक करबा लिस्ट ऑफ कंटेनर्स किछि नाही सब एकातर तो तुम क्वेश्चंस आसी पले हाउ टू डिलीट बड़े भाई प्रून कमांड टा प्लंगर मने नता है राइट हाउ टू डिलीट all the stopped container, all the exited or stopped containers. So you can use docker container prune. Perfect. गला तापरे सपोज मु एबे जो एग्जांपल दोतली इमेज डिलीशन जदी गोटे इमेज यूज हेची कंटेनर क्रिएट करया पे दा डिलीट हबन केमथि ना हमें देखो जस्ट docker image plus ए पर्टिकुलर यूज करिकरी गोटे कंटेनर क्रिएट करछि राइट ता पे कोन कमांड लिखबी docker how to create a container using container run command docker container run command then container name or image name तुम कंटेनर नेम दवा चाहो तो दे पारियो न डायरेक्ट इमेज नेम दे दबो एठी Amazon Linux ओके Amazon Linux तो एटा गोटे मु कंटेनर क्रिएट कर दोची से कोन क्रिएट हे गला कंटेनर गोटे तबे बेचे क्रिएट हैला बट एटा एग्जिट हे गला जेटोटा केवल गोटे Amazon Linux कंटेनर इमेज ता आदरे कोन अछि केवल गोटे लाइनक्स प्लेटफॉर्म अछि जहाँ कमांड एग्जीक्यूट करा कथा एग्जीक्यूट करिवो तापरे तमे एटा टर्मिनेट हे जिवो ओके तो मैं एबे चेक करबी एठी कोन हमर गोटे इमेज गोटे सॉरी गोटे कंटेनर क्रिएट हेछि ओके can anybody tell me when we run a container right when we run a container what happens actually हमें तो गोटे कंटेनर रन करिबा कौन हबो let's think about this part जल्दी को गोटे कंटेनर हमें रन कला बेले मु बुझे ऑलरेडी जो हमें कंटेनर गोटे क्रिएट करते तुमको बुझे ऑलरेडी राइट गोटे कंटेनर जो हमें रन करिबा तो कौन होगा सिंपल रन कमांड गोटे लिखी राइट कौन हम এইটা कौन এটা कौन কি কব এটা कौन Amazon Linux टा जल्दी को लेट करनी जे भी कहि परियो सर्वर कौन गाइस हां तो माने से बुझिछ ना नहीं इमेज ने इटा कौन मु तुमको देखिली वर्तमान डॉकर इमेज एलएस এটা कौन लिस्ट आउट द इमेजेस राइट तो इटा कौन Amazon Linux टा कौन गोटे एठी हमर कौन हम डॉकर पाठ पढुछे
तो Amazon Linux गोटे इमेज एठी मु Amazon Linux EC2 इंस्टेंस कथा कहूनी मु एठी डॉकर जोटा हम वर्तमान पढुचे ता विषय मु कहूची एठी हम गोटे इमेज यूज करछे तो मु तळे जोटा एटा रन कली डॉकर कंटेनर रन तो एटा हला गोटे इमेज आमे दबा राइट से इमेज हिसाब रे से कंटेनर क्रिएट करिवो जो इमेज आमे दबा सेही हिसाब रे से कंटेनर क्रिएट करिवो किए डॉकर तो एठी हला कंटेनर टा कोन एटा हला गोटे मैनेजमेंट कमांड डॉकर रो मैनेजमेंट कमांड रन हला सब कमांड राइट कमांड तो डॉकर हमें यूज करी मैनेजमेंट कमांड कंटेनर यूज कले रन कले आउ इमेज देले तो ये कंप्लीटली क्रिएट करिवो कोन ना ये गोटे कोन कंटेनर क्रिएट करिवो इट विल क्रिएट वन कंटेनर तो को कंटेनर क्रिएट करिवो ना Amazon Linux जो इमेज ता अछि से इमेज रे जहा इंस्ट्रक्शन थिबो जहा इंस्ट्रक्शन थिबो सेही इंस्ट्रक्शन हिसाब रे से कंटेनर क्रिएट करिवो बुझी पाइलो से इंस्ट्रक्शन हिसाब रे कंटेनर क्रिएट करिवो तो कंटेनर क्रिएट हे गला तो कंटेनर रो काम जहा थिबो से एग्जीक्यूट हे गला तो बे कंटेनर जो क्रिएट हैला ए इमेज ता वर्तमान कोन यूज हेची कोन करिया पई ए कंटेनर ता क्रिएट करिया पई राइट तो आमे जतबळे ए रन ए कमांड ता को आमे जतबळे एग्जीक्यूट करिबा कोन हबो फर्स्ट व्हाट इज द फ्लो तो तुम क्वेश्चन आछियो जतबळे आमे गोटे कंटेनर रन कमांड यूज करिबा गोटे इमेज यूज करी कंटेनर रन यूज करिबा then what will happen how docker will create the container so first kon karibo first kon karibo से ए इमेज टाकू राइट locally खोजिबो राइट locally सर्च करिवो सर्च the image in the local machine right in the host machine कोडा host machine कोडा host machine जोडा जोटी डॉकर इंस्टॉल हेची राइट सेटा हमर होस्ट मशीन से सही मशीन रे कोन इमेज खोजिबो जदी मिली गला एठी कोन आसीबो कंडीशंस आसीबो जदी फाउंड हैला देन क्रिएट फाउंड हैला देन क्रिएट कंटेनर जदी नॉट फाउंड हैला locally जदी पाइलानी not found then what it will do it will download the image from registry to host registry ru kon karibo download karibo then create container तो फर्स्ट कौन करिवो सर्च करिवो इमेज को होस्ट मशीन
जदि पाइला कंटेनर क्रिएट करिवो जदि न पाइला देन it will download 2.1 2.2 it will create container clearly बुझी पारलो ए क्वेश्चंस ता भी तुमको से पचारि पारंती ओके फाइन तो आमे एबे देखुतले कोन जा मु तुमको एबे कहउतली जो इमेज आमे यूज कले वर्तमान ए पर्टिकुलर इमेज ता यूज हेची कोडी कंटेनर द्वारा आमे तो जेतु कंटेनर क्रिएट कले से इमेज ता कंटेनर वर्तमान यूज करूचे जदि मु चाहि भी एबे ताको डिलीट करिया पाई लेट्स सी व्हाट विल हैपन हमर कंटेनर क्रिएट हेची ए कंटेनर ता क्रिएट हेची कंटेनर आईडी इमेज यूज हेची अमेज़न लिनक्स अच्छा एटा कोन कंपैशनेट एस्टोनेली इ नाटा केमती होची के दोची if you don't Automatically. provide it exactly so automatically being given by the docker so if you don't specify a name then automatically it will be given by the docker okay so हमें एबे डिलीट करिया से इमेज जो इमेज ता सपोज इमेज हमरो दरकार नै माकू डिलीट करिया पे चाहूची docker image rm देखो जे हमको मना कला कॉन्फ्लिक्ट आसला काहे कि अनेबल टू रिमूव रिपोजिटरीज रेफरेंस अमेज़न लिनक्स काहे कि ना इट इज यूजिंग इट्स रेफरेंस सी दिस कंटेनर ए कंटेनर आईडी ए आईडी ता इज यूजिंग इट्स रेफरेंस्ड इमेज ए इमेज ता को से यूज करछ ए कंटेनर इमेज ता को यूज करछ सेति पई से अलाउ कलानी डिलीट करिया पई तो तमे डिलीट करिवो केमती दीटा वे करि परिवो आइदर तमे से कंटेनर को स्टॉप कर दबो सॉरी नॉट स्टॉप कंटेनर को डिलीट फास्ट करिवो तापर इमेज को डिलीट करिवो और फोर्सफुली यू कैन डिलीट द इमेज तो तमे यदि फोर्सफुली डिलीट करिया पय चाहउछ जे -f ऑप्शन दे दबो देन इट विल डिलीट द इमेज देखो फोर्सफुली डिलीट कर देला बट कंटेनर स्टिल थिबो देखो कंटेनर अछि बट हम इमेज फोर्सफुली हमें डिलीट कर देले हमें फोर्सफुली देखो खाली गोटे अछि वेट कर ओके तो ये कंटेनर आ किछ आवश्यकता ही नहीं तो हमें कौन करबा कंटेनर टा को भी डिलीट कर दबा कंटेनर तो मु दीटा वे रे तुम बतै दली राइट कंटेनर rm सॉरी docker container ओके docker container rm डिलीट होगा तो ए वे रे हमें कंटेनर काम करिबा फाइन तो हम पाखे केवल गोटे इमेज रहिला ओके सो लास्ट क्लास में तुम कहतली डॉकर हब रे साइन अप करिवा पई राइट गोटे अकाउंट क्रिएट करिवा पई कर दैछ सब एटा फ्री तुम किछि चार्ज करिवनी ओके फ्री ऑफ कॉस्ट सो ओपन सोर्स राइट फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन sign up yourself okay sign up करो कारण हमरे नेक्स्ट हमें डॉकर हब रे ही काम करियो इमेज जो बिल्ड करिबा आवर ओन इमेज से तळु को कोन हमको अपलोड करिया पडियो डॉकर हब रे तुम सिखेबी तो तळु दरकार पडे तुम प्रैक्टिस भी करिवो सेटा नेति थिबा दरकार तुम पाखरे जेतु डेवऑप्स इंजीनियर तुम बनिबा बुझाउछ you should have this kind of accounts right fine तो हमें डॉकर लॉग्स देखिथिले राइट टू चेक करिया पय लॉग चेक करिया पय तापरे आ गोटे कमांड तुम बते दोची डॉकर इंस्पेक्ट तो बहुत सारा त कमांड अछि गोटे गोटे कमांड हम सब जानिबा ता विषय रे आगु भी जते पढिबा तो कमांड विषय रे जानिबा तो डॉकर कंटेनर हेल्प मारिया देखो हमें कौन सीपी मु बतैतली लास्ट क्लास रे कॉपी फाइल वा फोल्डर क्रिएट करिया पय तो क्रिएट ए न्यू कंटेनर गोटे क्रिएट करिया पय तमे यूज करि परिबो exec कमांड भीतर बतै दोछ तमे कोनसी गोटे कमांड एक्जिक करिया पय एक्जीक्यूट ए कमांड इन ए रनिंग कंटेनर तो मु एटा यूज करथली लास्ट क्लास रे तुम देखथली केमती हमें गोटे कंटेनर भीतर को जाई परिबा बा गोटे कोनसी कमांड एक्जीक्यूट करि परिबा एक्जिक यूज करिकरी
inspect to display detailed informations about one or more container माने कंटेनर विषय किसी inspect करिया inspection करिया पाई inspect यूज करि परिबो कोनसी कंटेनर किल करिया पाई ता लॉग देखिया पाई लिस्ट करिया पाई पॉज करिया पाई डिलीट करिया पाई रीनेम करिया पाई रिस्टार्ट rm run आम यूज करछे स्टार्ट स्टॉप करछे स्टार्ट्स डिस्प्ले लाइव स्ट्रीम कोनसी कंटेनर रन होची तार लाइव स्ट्रीम देखिया पाई करि परिबा राइट तो बर्तमान मु सपोज गोटे आ गोटे कंटेनर रन करूची ओके डॉकर कंटेनर रन ओके बैकएंड रे रन करिया पाई कोन ऑप्शन यूज करबी how to run a container in backend ये दीटा Detach क्वेश्चंस mode. पचारिबे तो कोन सर डिटैच मोड कहउछन कि हाइफेन डी ऑप्शन ओके इन डिटैच मोड तमे कहि परिबा डिटैच मोड बा बैकएंड ओके डिटैच मोड इज गुड टू से डिटैच मोड ओके इंटरैक्टिव करिया पई हमें हाइफेन आईटी करबा लिखिबा जदि हाइफेन आईटी न भी दोचे बाय डिफॉल्ट इंटरैक्टिव मोड को आसी जिवो ओके तो मु हाइफेन डी दोची तो तार ना दे देबी गोटे नेम सपोज वेब सर्वर गोटे पोर्ट दे दोची पब्लिश करिवा पई राइट तो होस्ट पोर्ट आउ कंटेनर पोर्ट ओके फर्स्ट आला तमरो कंटेनर पोर्ट सेकंड आला तमरो होस्ट पोर्ट ओके देन मु चाहूँ सपोज तापर इमेज नाटा देबी httpd ओके not this one तुमको एक्सप्लेन कर दूची कमांड विषय रे okay so এটা কোন name of the container name of the container এটা হলো কোন port publishing right publish port এই যে পোর্ট রইলা দিটা ওয়ান ফার্স্ট পোর্ট সেকেন্ড পোর্ট ফার্স্ট পোর্টটা হলা তোমার কোন কন্টেইনর পোর্ট যা কোনতি কন্টেইনর পোর্ট আর সেকেন্ড পোর্টটা হলা তোমার কোন হোস্ট পোর্ট মানে হোস্ট পোর্ট হলা जो मेसिन रे कंटेनरटा रन होची तार पोर्ट तो आमे जानिछे अपाची रो डिफॉल्ट पोर्ट कोन अपाची रो डिफॉल्ट पोर्ट अपाची सर्वर रो डिफॉल्ट पोर्ट हला कोन केते 80 तो सेति पई कंटेनर रो भी डिफॉल्ट पोर्ट 80 आउ होस्ट पोर्ट रो भी डिफॉल्ट पोर्ट आमे 80 देइछे तो आमे जदि याकू रन करिबा कोन हो देखिबा राइट रन तो गोटे कोन कंटेनर रन हो गला तो ई कंटेनर को आमे एक्सेस केमति करिबा नहीं होस्ट पोर्ट रो होस्ट मशीन रो आईपी एड्रेस माने एई जो मशीन टा रन हो जे पर्टिकुलर मशीन टा में रन करछे राइट तो ई मशीन रो आईपी एड्रेस हमको दरकार तो ई मशीन रो आईपी एड्रेस हमें नबा हिट एंटर सी इट वर्क्स तामाने हमें एप्लीकेशंस तो लास्ट क्लास रे हम गोटे इंडेक्स फाइल बनेइतिले index.html छोटो एप्लीकेशन गोटे ये फाइल टा को हम कॉपी करियार अछि के कहबो कोन कमांड मु यूज करबी cp yeah cp and then container path so suppose container dali colon एठी हमको दवा पड़िबो user
maybe our path ଆମେ ଭୁଲି ଗଲାଣି okay we'll do one thing let's go and inspect the container तो ଆମେ container को inspect मते container home directory बा working directory से फाइल टाइप कॉपी करेगा अछि जो apache server root directory मते एटा कॉपी करेगा अछि तो तार root directory जानिबी केमती ना मु गोटे कंटेनर को जदी इंस्पेक्ट करबी कंटेनर इंफॉर्मेशन विषय मते सब जाना पड़ जिवो तो मु कोन यूज करबी कंटेनर पूर्व डॉकर कमांड यूज करा पड़िबो डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट द कंटेनर आईडी देखो पूरा कंप्लीट डिटेल्स सब डिटेल्स कंटेनर विषय दे दो देखो केते कंप्लीट डिटेल्स देखो कंप्लीट डिटेल्स राइट तार वर्किंग डायरेक्टरी हला कोन apache 2 user local apache 2 okay user local apache 2 तो ये डायरेक्टरी को हमर कोन तार वर्किंग डायरेक्टरी बट मते st docs भीतर को कॉपी करियार अछि राइट तो मैं एटा को कॉपी कर दोछि docker container cp index.html तापरे ओके एटा देली ता पूर्व मते कंटेनर दबा पड़ियो राइट कंटेनर ता तो कंटेनर आईडी ता कॉपी कर दोछि कंटेनर आईडी दबो जदी कंटेनर आईडी भी जदी मने भी नाही जेहेतु अल्फा न्यूमेरिकल तमे तार कंटेनर नाम भी देई परियो हमें देइतले कोन वेब सर्वर कंटेनर नाटा तार को पाथ को कॉपी करे अछि राइट तो मते apache 2 ता भीतर कोन पाछ st docs एतरी कॉपी करे अछि राइट देखो सक्सेसफुली कॉपीड st docs तो मु वर्तमान एठी जदी रन करिवि रिफ्रेश करिवि सी जोड़ा हम लास्ट क्लास रे करथले से कंप्लीट एप्लीकेशन ता कॉपी हे गेला फाइल ता कॉपी हे गेला तो वर्तमान ए कंटेनर हमर रन कोन करूची हमर एप्लीकेशन रन करची राइट तुम देखि बेला ओटा एप्लीकेशन रन होची तो जो कंटेनर ता अछि ता भीतर आउ कोन अछि खाली तो हमर इंडेक्स फाइल ता नाही ता भीतर कोन अछि apache सर्वर भी इंस्टॉल हे गिरे अछि राइट कंटेनर भीतर apache सर्वर अछि apache सर्वर रे हमें कोन रखले हमर एप्लीकेशन ता डिप्लॉय कले index.html तो एटा कंप्लीटली से रन करूची राइट तो जदी ए कंटेनर ता कोन माने रखि दाओ जो कंटेनर सीपी केवल रनिंग कंटेनर को हमें कॉपी करि परिबा जदी कंटेनर डेड हे जाईची then we cannot copy it if a container is dead then we cannot copy it okay that's very important you should know this then inspect विषय जानिले कंटेनर विषय जानिले राइट डॉकर हब रे जानतले कोन सब इमेजेस अछि इमेज रो डिफरेंट टैग्स केमते हमें चेक करिबा राइट को कंटेनर हमको को पर्टिकुलर टैग्स दरकार को कंटेनर केते वर्जन रो दरकार सब डिटेल्स हमें जानिले ओके नेक्स्ट हमें कोन जानिबा बाकी सब कमांड्स विषय हम तो बते देछि